something about me. I'm sorry. Yeah, so a little something about me. I'm from Jabalpur, and I've always been interested in the world of modeling and pageantry. And just like you all, I also started with an online pageant, and it has been an amazing ride so far. And I hope it is so in future too. And I hope the same for all of you. Without wasting any further time, let us start. I will just like to present my screen so that yeah, I guess the host has disabled screen sharing. Can you please look into that? You could check now with the Yeah, okay. Is it visible? It's visible, yeah. So yes, I will introduce to you the ramp first. Okay, so this is what a ramp looks like. This is the start ramp. Okay, this cross that I mentioned. Any pose, anything that is okay, and then this is the mid ramp. All right, and this is the head ramp. Okay, so any posing or any turning that has to be done, it is done only on these 3 points and nowhere else on the ramp. Okay, so this is what a ramp looks like. I hope all of you have watched it in some movie or walked it. And then I understand that all of you all have doubts regarding heels. So I will just talk about that right now. So these are block heels. You cannot wear them in pageantry or in modeling, and these are wedges, and these are block heels. These also do not work in pageants or in modeling, and neither do these. The only types of heels that work will be these two kinds of heels. I'll just show you. This is the kind of heel that I'm talking about. Okay, and if you're not very comfortable, because I understand some of you all are beginners, you can start with you know a little height. Okay, so these are 5'5" heels. All right, you all can start with something less, like okay, it could be 4 or 4.5, but it has to be pointed. All right, the heel has to be pointed like this. All right, if you have any doubts relating to heels or anything, you can text me on my Instagram handle. Harry will give you my details, and you can just show me pictures of what is right and what is wrong. I understand that after this also some people have doubts, so you can ask me personally. And I will show you some exercises. Okay, from now on our training will be practical. Okay, I will show you practically what to do and what not to do. These are some exercises, and I will show you these practically. Then we will learn about posing. All right, there are two kinds of poses for beginners, and then comes turns. There are also two types of turns, and then comes our practice. Okay, so I will show you my entire ramp walk in this session. All right, so I will just join in from my phone because I won't be able to connect my Bluetooth earphones with my laptop. The voice somehow gets it gets weird. So I will leave the meeting here. So there are 4 things that we have to do. First is exercising, and then the second one is uh, posing, third is turning, and then the last one is practicing. I just want you all to read exercises part first. Okay, I will give you 2 minutes to read this, and then we can begin.
Okay, so by the time Vidhi joins in, please try pinning her screen onto the speaker view. It will make it easier for you guys to see her walk properly because she will be walking on the phone. So वहाँ पे एक option आता है pin this speaker, so that will make it easier for you guys. Okay. I hope I'm visible and audible. Yes, Vidhi, you are visible. All right. So I will just show you 3 exercises. Other exercises are basically dancing and stretching that you all can, just connect to your YouTube and see some stretching exercises. For ramp walk, before every ramp walk session or when you are practicing, there are 3 exercises that you need to do to open up your body. So the first exercise is leaning your back against the wall. All right. ऐसे आपको किसी भी wall से ऐसे खड़े हो जाना है. All right. And your body should look straight. So this is how the body should look while walking on the ramp. Ekdam straight. Some people tend to go like this. Some people tend to go like this. These two are the wrong methods. This is the only right way. All right. This is how the body should be aligned while walking on the ramp. और ये practice हम कैसे कर सकते हैं? By leaning against a wall like this. Straight. हर रैंप ऑफ सेशन के पहले यू शुड स्टैंड लाइक दिस फॉर 1 मिनट. तो आपका मसल मेमोरी बन जाएगा एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट वॉकिंग एग्जैक्टली लाइक दिस. ऑलराइट. So I hope the first exercise was clear. I'll just go to the second one and then third one, and if you have any doubts आप chats में लिख दीजिएगा. Harry will inform. Okay, second exercise is standing like this, your hands on your waist, and then standing on your toes like this and back and forth. Your legs like this. Basically, what I'm doing is I'll show you laterally. This is what you should do. Okay, and then the third exercise is shifting your weight from one hip to the other. Okay, open your legs apart like this and again your hands on your waist. और फिर एक हिप पर वेट डाला, फिर उसके बाद में दूसरे. We keep shifting. ऐसा मूवमेंट दिखना चाहिए आपकी वॉक में. ओके, वेट शिफ्टिंग फ्रॉम वन हिप टू द अदर इन योर रैंप वॉक. ओके, all right. So these were the 3 exercises. I will show it to you again so that if you have any doubts those can be clarified. First one is दीवार पर ऐसे खड़े हो जाना. All right, and then start walking simply. तो आपकी बॉडी ऐसी अलाइन स्ट्रेट दिखनी चाहिए. Not like this or not like this, but simply straight. Second exercise is standing on your toes and just going like this. Okay, and then the third exercise is shifting your weight. Simply shifting your weight. Okay, so these 3 exercises you should do this on a daily basis. अगर आप ramp walk नहीं भी कर रहे हैं, still you should do this. It will make your movement very nice while walking on the ramp. So now let's move on to the poses. All right, Harry, can you just tell in the ramp in the. So guys, if so far about the exercises, do you want her to repeat anything? Please put it into the chat box. I guess people are messaging on the chat box. I just cannot see it on my phone. No worries. I will coordinate that with you. So far, it's just some problem about the power cut and all, so that's not of your concern. Okay. All right. Okay, so now let's move on to posing. I'll wear my heels for that. All right, and if you have any doubts in the meantime, you can post it on the chat box. Also, guys, if you missed the initial part for the ones who joined late, the recording will be put up on YouTube. It's already up for the previous sessions.
So you can check out the screen recording there, and yeah, so that would help. So I'm in my heels now, and we will start with the posing. Okay, there are two types of poses, as I mentioned earlier. Okay, focus on me right now. Okay, अगर आपको कुछ भी डाउट है, I will show you 3 to 4 times. All right, I hope कि इतने में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं. So just focus on me for the next 5 to 10 minutes. All right. So yes, the first pose is an open leg pose. All right. So you simply left leg आगे and right leg यहाँ. Your weight shift to the right hip. Okay. I will show you again. Left leg आगे, right leg यहाँ. Your weight on the right hip. Okay. I will show it to you again. Left leg आगे, right leg यहाँ, and weight on the right hip. Okay. So this is the first pose. ये आप अपना कहाँ कर सकते हैं? Start ramp और head ramp पे. I know कि while introducing, I told you that you can also pose on the mid ramp, but that is not in the beginners level. And this training is for the beginners level. जब आप और अपना थोड़ा advanced होंगे, when you will, you know, go to other rounds and everything, you should then try to change everything about your walk. But right now, आप सिर्फ अपने basics पर ध्यान रखिएगा. First thing is poses, open leg and an S stance that I will show you. और ये poses आप कहाँ कर सकते हैं? Start ramp and head ramp पर. मैं आपको mid ramp पर इसलिए दिखा रही हूँ because on the head ramp my feet will not be visible on my phone. So I will just show you the poses on the mid ramp. Alright, but ये poses आपको या तो start ramp या head ramp पर करने हैं. And keep one thing in mind, every pose आपको कम से कम 4 seconds के लिए hold करना है. Okay, जैसे आप गए on the head ramp, left leg and then right leg, 1, 2, 3, 4, and then you move ahead. All right. So 4 seconds के लिए कम से कम hold करना, उससे कम नहीं. And this was the open leg pose. I hope it was clear. I will show you 2 more times. All right. Left leg आगे and then the right leg. Wait, कहाँ पर गया? Right. Okay. Again. Left leg आगे, right leg यहाँ पर, and your weight on the right hip. All right. Now we go on to the S stance. So S stance is also a pose. I will show you. इसमें क्या होगा? ये भी head ramp पर होगा. Okay. Right, left leg आगे, right leg टेढ़ा, और फिर left leg वापस से आगे, और weight वापस से हमारा right hip पर गया. Okay. You have to hold this again for 4 seconds. I will show you 3 more times. Okay. एकदम focus से देखिएगा. It will all be clear. All right. I will go again. Left leg सबसे पहले आगे बढ़ता है हर एक pose में. All right. Left leg, right leg टेढ़ा, left leg सामने, और पूरा weight हमारा गया right hip पे. Okay. So yes, I will show it to you 2 more times. Focus. Left leg, right leg टेढ़ा, left leg सामने, and weight on the right hip. Open leg में भी weight was on the right hip, and S stance में भी weight was on the right hip. All right. So we do that again. Left leg, right leg टेढ़ा, and then the left leg, and then the weight on the right hip. Okay. So yes, these were the 2 poses. All right. और जब हम turns पे जाएंगे तो ये poses और ज़्यादा clear हो जाएंगे. So if you have any doubts right now, keep it to yourself. जब हम turns पे जाएंगे तो वो अपने आप से आपके doubts clarify हो जाएंगे. All right. I will show you both the poses one more time. All right. Open leg and S stance. Okay. Just watch me. Right leg
left leg, I'm sorry, left leg, right leg, and weight on the right hip. Okay, hold every pose for 4 seconds, and then we go again, the S stance, left leg, right leg टेढ़ा, left leg सामने, और हमारा weight पूरा right hip पे. ठीक है? So I hope the poses were clear. All right. Now we move on to the turns part. Okay, the turns काफी ज़्यादा complicated है. But अगर आप उन्हें break करें दो parts में, okay, which I will show you how to do that, तो वो एकदम clarify हो जाएगा कि आपको turning कैसे करना है. So focus on me entire time. All right. अगर कोई भी doubt है, कुछ भी है, तो instead of moving to the chat, okay, आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हो ताकि मैं आपको वापस से दिखा सकूं. ऑल राइट. सो व्हाट विल हैपन इज कि आपका फोकस मुझ पर भी रहेगा. यू वोंट हैव टू शिफ्ट टू द चैट बॉक्स. ऑल राइट. सो आई विल शो इट टू यू राइट नाउ. टर्निंग 2 टाइप्स की होती है, ओपन लेग टर्निंग एंड स्टांस टर्निंग. So what happens is when you go to the head ramp and you pose, you must turn, right, in order to return. जब भी आप हेड रैम्प पे जाते हैं और आप कोई भी तरह का पोज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप टर्न हमेशा करते हैं, राइट, ताकि लाइक आप आगे बढ़ सकें. So this is how turns help. It helps you in moving back from the head ramp to the start. So let's do this again. I will show you 2 types of turn, open leg turn and then a stance turn. ऑलराइट. सबसे पहले जैसे हमने ओपन लेग पोज सीखा, वैसे अब हम सबसे पहले ओपन लेग टर्न सीखेंगे. ऑलराइट. So this is also to be done on the head ramp, but I will show you on the mid ramp. All right. Left leg and then right leg, weight on the right leg. All right. ये हमारा S4 हमने open leg pose किया head ramp पे, and then we go like this. Okay. What we do is हमने अपना right leg उठाया और टेढ़ा रखा. Okay. What we did is open leg pose करने के बाद में हमने अपना right leg यहाँ रखा और लेफ्ट लेग आगे लेकर आए और फिर वेट हमने यहाँ पर डाल दिया अपने हिप पे. ओके. फिर हमने अपना लेफ्ट लेग उठाया, राइट लेग सामने रखा, एंड देन वी गो. सो दिस इज वन टाइप ऑफ अ टर्न. ओके. आई विल शो इट टू यू 3 more times. अच्छे से फोकस कीजिएगा. हर बार मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगी, सो दैट इफ यू हैव टू नोट इट डाउन यू कैन डू दैट, so that while practicing you know what goes on. Okay, so the first thing is while turning you have to make a pose. All right. So the first pose was open leg pose. Left leg aage, right leg ऐसे, and the weight is on your right hip. Okay, and then हम अपना weight यहाँ से shift करके यहाँ लेकर आएंगे and simultaneously right leg उठाकर टेढ़ा रखेंगे और left leg सामने लेके आएंगे and weight again on the right hip. तो हमारा बेसिकली एस स्टांस बन गया. ओके. तो पहले हमने किया ओपन लेग एंड देन एस स्टांस, फिर हमने अपना लेफ्ट लेग उठाया, देन राइट लेग सामने रखा एंड देन वी गो. ओके. आई विल शो यू 2 more times. पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ में अच्छे से देखना ताकि आपको कोई डाउट ना हो, एंड इवन इफ यू डू आई विल क्लैरिफाई इट इन द एंड. ऑलराइट. सो लेट्स स्टार्ट. ऑन द हेड रैम्प आई गो, ओपन लेग पोज, वेट शिफ्ट ऑन द राइट हिप, फिर वेट शिफ्ट हुआ लेफ्ट हिप पे, राइट लेग टेढ़ा, लेफ्ट लेग सामने, लेफ्ट लेग उठाया, राइट लेग सामने, एंड देन वी गो. ओके. नाउ दिस इज द लास्ट टाइम. फोकस ओनली ऑन मी. इफ यू आर ट्राइंग टू नोट डाउन द पॉइंट, स्टॉप दैट. सिर्फ मुझे देखो. ओके. विजुअलाइजेशन से सबसे अच्छा सीखने में आएगा. और अगर कोई डाउट है भी तो यू नो हैरी इज अपलोडिंग ऑल द वीडियोस ऑन यूट्यूब, यू कैन वॉच. ओके. सो यस, वी स्टार्ट नाउ. लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग टेढ़ा, हिप, वेट ऑन द राइट हिप, उठाया, राइट लेग टेढ़ा, लेफ्ट लेग ऐसे, एंड देन वी पिक दिस अप एंड देन सामने एंड वी गो. ओके. सो दिस वाज द ओपन लेग टर्न. Now I will show it to you without describing. ठीक है. 2 बार मैं आपको without any description शो करूंगी कि वो लगता कैसा है, and then you can comprehend it later. ठीक है. So I go and this is me on the head ramp pose.
ओके, ये टर्न था. अब हम करेंगे स्टांस वाला टर्न. ऑलराइट, ये भी हेड रैम्प पर होगा एज आई टोल्ड यू. सो वी गो और हमने स्टांस रखा अपना पोज के लिए. ओके, एंड देन वी पिक्ड अप आवर लेफ्ट लेग. ठीक है, और वो हमने राइट लेग सामने रखा. ऑलराइट, देन वी पिक्ड अप आवर लेफ्ट लेग अगेन, राइट लेग सामने रखा. अगेन वी लिफ्टेड अप आवर लेफ्ट लेग, राइट लेग सामने रखा और फिर हम चले. So this was the stance turn. I will show you 2 more times. Okay, focus only on me. All right. So we move. I move, and I go to the head ramp. Okay. I pose in an stance. Okay, I will hold the pose for 4 seconds. I pose 4 seconds के लिए. Then I pick up my left leg, put my right leg in front. Again, I pick up my left leg and put my right leg in front. And then again I lift my left leg, right leg in front, and then I move. All right. Again, I will show it to you. Does anyone have any doubts? Yes. Okay, I don't think so. I will show you the stance pose again. Okay, I walk and I walk and I walk and I go to the head ramp. Okay. S pose. Pick up my left leg, right leg in front. Pick up my left leg, right leg in front. Pick up my left leg, right leg in front, and I go. Okay, so this was the turn and the poses. Okay, so these 2 things I have, 3 things I have completed. If anyone has any doubts, you can tell me. I'm reading the chat. Guys, if there is anything you want her to repeat, please put it into the chat box. Walking speed is, it depends on the song. अगर आप बहुत fast song पे walk कर रहे हैं तो it has to be fast ताकि in tune रहे music के साथ में. Slow song के साथ कर रहे हैं तो थोड़ा slow. It also depends on the outfit. ठीक है, अगर आप evening gown में walk कर रहे हैं, evening gown is a long dress, तो उसमें walk slow होता है. Alright, अगर आप Indian में walk कर रहे हैं तो उसमें भी walk थोड़ा slow होता है. But if it is a western dress, western as in mini dress, like it's knee length dress और उससे short, तो walk उसमें fast होता है. Muskan, we must start walking from the left leg and turn the left leg, left side से होता है. Start from the left leg और turning the left side से होता है. डॉक्टर सोम्याश्री, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा पोज कितनी बार यूज करना चाहते हैं. आप एक ही वॉक में दोनों पोजेस इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं या फिर आप अलग अलग वॉक्स में अलग अलग पोजेस इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. टोटली डिपेंड्स ऑन यू. Yes, Pratima, all the poses have to be done only at the start and the head ramp. I will tell you about the expressions, okay, Manjusha. So basically expressions in pageants are smiling. So ये अभी आपका pageant चल रहा है, okay, you have to smile. अगर आप modeling कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो it depends on your outfit. आपको कैसे कैसा expression रखना है. Mostly models का poker face होता है. Poker face as in no expression. They just walk and they come back. But in pageant, you have to be वेरी इंटरैक्टिव. आपको जजेस के साथ में बहुत इंटरैक्टिव होना पड़ता है, इसलिए यू हैव टू स्माइल. एंड श्रद्धा, यू आर अनेबल टू सी मी ऑन स्क्रीन बिकॉज मेरा स्क्रीन बंद है. लाइक आई हैव स्विच्ड ऑफ माय स्क्रीन बिकॉज आई एम रीडिंग योर चैट. Vidya, should we do both the walks in a ramp walk? I couldn't understand you. Could you unmute and make me understand what you're trying to say? Hello. Pooja. Yes. Yeah. Hello. Yeah.
You showed two types of ramp walks, right? One with one. No, I showed you two types of poses and turning. Yeah, I poses. haven't showed you a ramp walk yet. No. Both the poses we should do, or we can choose any one of that. You can do both or choose any one. It totally depends on you. Okay, that's. आप ऐसा भी कर सकते हैं कि head ramp पर you started with an open leg pose. Sorry, start ramp पर you started with an open leg pose and then you moved to the head ramp and you did an S stance and then you turned back and then वापस से start ramp पर आए तो आप कोई सा भी pose use कर सकते हैं. Okay, try to be like I would say that try to be innovative. आप अलग-अलग poses use करेंगे तो it will look better. Pooja, we can start with our right leg first, but the thing is, for humans, left leg is stronger. So अगर आप left leg से start करते हैं, so that builds up your entire walk more beautifully than with the right leg. So Surbhi, I understand कि आपको 90 seconds का video बनाना है और आप depending on the space, okay, it could be a long space or a short space. Like मेरे लिए जो मैं आपको show कर रही हूँ, it is a shorter space. इसमें मेरा एक पूरा walk 30 seconds में complete होता है. So for 90 seconds I can make 3 videos, right? And I can like मैं उसको कोई भी ऐप यूज करके उन तीनों वीडियोस को ज्वाइन कर सकती हूँ. So that is what you also can do. एक राउंड अगर आपको वॉक करना है तो बड़ी स्पेस यूज करो. अगर आपको 2 राउंड यूज करने हैं तो मीडियम साइज की स्पेस यूज करो. और अगर आपको 3 वॉक्स इनकॉर्पोरेट करनी है तो आप लाइक जैसे मेरी स्पेस है उतनी यूज करो. Good evening, ma'am. Good evening. Yes, I'm Glory. Ma'am, I just wanted to know the round which you have done, like check one. First, you have shown us, right, how to pose. That pose round when you show us now how to pose. Like we have a role to pose like 2 times. Looking check one, again round and looking check 2. There is like, we have to do only once or twice like that. There is any rule or something like that? I cannot understand you. Are you trying to say कि we can pose once and then go back and then come back and pose yes, and yes, go yes. back? You have just That is what you can do. Yes. Because it depends on the space, right? If you have a larger space, you can complete it in one go, in one round itself. But if one round is head ramp से start करना, start ramp पर start करना, head ramp पे आना and then go back to the start ramp. So this is one round, all right? Then the second round also is start ramp पे start करा, head ramp पे आया and we went back to the start ramp. So this counts as one round, all right? Yes, ma'am. Depending on the space, you can complete any number of rounds. Okay. Shraddha, I don't think you should use flat heels because flat and heels, like they are totally different words, first of all. And heels should be at least 3 or 4 inches if you are starting new. I think there should be at least 3 or 4 inch heels because उनमें आपका वर्क ज़्यादा बेटर आता है rather than flat. Surbhi, as I told you, it totally depends on you what pose you want to use. If you want to use both, आप दोनों यूज कर सकते हैं. अगर आपको सिर्फ एक ही यूज करना है तो आप एक ही यूज कर सकते हैं. बट कीप इट इन माइंड कि एक राउंड में सबसे पहले आपने स्टार्ट रैंप पर पोज दिया और फिर आप हेड रैंप पे आए, आपने वहां पर एक पोज दिया, फिर आप वापस गए स्टार्ट रैंप पर, आपने वहां पर भी एक पोज दिया. तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो पोजेस. लाइक इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. Sarita, you can pose at the mid ramp, but I haven't taught you that. But if you are, if you're not new to this pageants and everything, and you know how to do that, you can do that. But मैं ये चीज इस सेशन में incorporate नहीं कर सकती because there are many people who are beginners and I don't want to confuse them. But if you want to do that, Sarita, you can do that.
yes, I will show you how to walk on the ramp, शिखा. मैं आपको पूरा वॉक दिखाऊंगी. अभी मैंने 4 में से 3 चीजें कंप्लीट की हैं. एक्सरसाइजेस, poses and turns. Last one is practice. So I will show you that practice also. Ma'am, हाँ. I have a question that we need to make a 90-second video. So we can. What video? Sorry, what video? 90 seconds video. So my question is that as you shown us 2 poses on mid ramp, assuming as a head ramp. No, not mid ramp. Yeah. So we can also do that thing. You can do that, but like as I said to as I mentioned for Sarita also, कि अगर आपको करना है आप कर सकते हैं, बट बिकॉज इट इज बिगिनर्स लेवल, आपके टैलेंट राउंड 1 में स्टार्ट रैंप एंड हिट रैंप से ज्यादा की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, सो आई डोंट थिंक यू शुड डू दैट. बट यस, इफ यू वांट टू गो अबव एंड बियॉन्ड, इट इज ऑल ऑन यू. बिकॉज इस सेशन में आई वांटेड टू बी आई वांटेड टू टीच एवरीवन बेसिक्स, बिकॉज नॉट एवरीवन इज has practiced ramp walking earlier. Almost सभी यहाँ पर beginners हैं, इसलिए मैंने mid ramp नहीं दिखाया, because it is very confusing. It was for me when I started also. That is why. But if you want to do that, you can do that. Okay, thank you. Okay, so Neha. Vidhi, I guess we can move to the walk part. These people have unending questions, so yeah. Okay, yeah. I'll just, read Neha's question once and then I'll do that. हाँ, okay. So Neha, you have 3 questions. सबसे पहला तो पॉइंटर हील है अगर आपके पास में, तो आपको प्लेटफॉर्म हील लेनी चाहिए, जैसा मैंने आपको दिखाया था, राइट? मैं आपको एंड में दिखाऊंगी प्लेटफॉर्म का क्या मतलब होता है. ओके, सो प्लेटफॉर्म से क्या होता है, बैलेंस बन जाता है एंड यू डोंट फॉल. ऑलराइट. सेकंड चीज है बैलेंस आपका जब हम बैक टर्न लेते हैं, तो यस, बैक टर्न एज इन ओके, सो योर बैलेंस शुड बी ऑन योर राइट लेग. और एक्सप्रेशन, आई विल शो यू एक्सप्रेशंस इन माय वॉक राइट नाउ. ओके, सो या, आई विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिस नाउ. So I will show you the entire walk now. Focus on me. I usually start with an S stance. Okay, ये मेरा S stance है. I usually stand in an S stance before walking, because इससे आपका posture sleek और tall दिखता है, rather than अगर आप S stance करेंगे तो इसमें आपका, क्योंकि आप ऐसे हो जाते हैं तो आपकी height पहले ही कम दिखती है. So I always start with an S stance so that I look tall and sleek. Okay, and I give a little smile. I hold this pose for 4 seconds, and then I lift my left leg and I start walking. Okay, तो walk करते समय keep in mind आपके hips sway होने चाहिए और आप एक लाइन में walk करें, ठीक है? So look at me walking. I'm walking in one lane and my hips are swaying. I'll just keep my hands here so you can see my exact movement. Okay, I am walking in one lane and my hips are swaying. Okay, so this is how you should walk. All right, I will start again. I just had to clarify these 2 things that mostly girls ask me. एक लाइन में चलना है या नहीं? Yes, एक ही लाइन में चलना है, क्रिस क्रॉस नहीं करना है, because क्रिस क्रॉस करने से आप गिर सकते हो, ठीक है? So you have to walk in a straight line. And second thing is hips sway होने चाहिए. And third thing is always keep a smile on your face. It can be a big smile, it can be a smile without showing your teeth, but always keep in mind that a smile should be there on your face. All right. So I stand in an S stance. I give a little smile for 4 seconds, and then I lift my left leg. I start walking in a lane, keeping my body straight, my hips swaying. I come to the head ramp. मैं सबसे पहले S stance दिखा रही हूँ, and I bring my left leg in front. Okay. I smile a little. For 4 seconds, I hold this pose.
and then I lift my left leg in order to turn. ठीक है, left leg उठाया, right leg सामने लाया, and then again left leg उठाया, right leg सामने लाया, then left leg वापस से उठाया, right leg सामने लाया, and then we go. Then we come to the start ramp and this. Okay, I will show you S stance ka walk 2 more times. Okay, so I stand in an S pose. Okay, irrespective of what I'm doing on the head ramp, मैं या तो open leg pose करूँगी या S stance करूँगी, but मैं start हमेशा S stance से करती हूँ, and मैं चाहूँगी कि आप सब भी ये करें because your body will look taller and thinner. Okay, I stand in an S pose. I hold it for 4 seconds, and then I lift my left leg and I start moving. Then I come to the head ramp and I give an S pose. I hold it for 4 seconds. You can do this, one hand here and one hand like this, or both hands like this, or you can keep both hands like this. But what I usually do is keep my back hand like this. Okay, this also helps in making your body look thinner. ठीक है, फिर आपका लेफ्ट लेग आपने उठाया, राइट लेग सामने रखा, वापस से लेफ्ट लेग उठाया, राइट लेग सामने रखा, देन अगेन लेफ्ट लेग उठाया, राइट लेग सामने रखा, एंड देन वी गो. स्टार्ट रैंप पे आके वापस से I will show it to you again. All right, I stand in an S pose, lift my left leg, and I start walking in the lane. Then I come to my head ramp, I give my S pose. I smile, I hold the pose for 4 seconds. फिर left leg उठाया, right leg आगे. Then again left leg उठाया, right leg आगे. Again left leg उठाया, right leg आगे. And then I go. Okay, so I hope this walk was clear. Nothing to be done. Walk करते समय 3 points अपने दिमाग में रखना. सबसे पहला, walk in a straight line. All right. Second is sway your hip. बहुत ज्यादा भी sway नहीं करना है, natural दिखना चाहिए. और वो natural movement कैसे आता है? जो मैंने आपको exercise दिखाई वो करने से, like this, and like this. Okay. तो इससे नेचुरली आपके हिप स्वे होंगे वॉक करते टाइम. और ये 2 चीजों के अलावा द थर्ड थिंग वाज ऑलवेज स्माइल. ओके, बिकॉज यू वांट टू इंटरेक्ट विद द जजेस. इफ यू डोंट कीप अ स्माइल, जजेस आपको नहीं देखेंगे. ओके, so keep a smile on it. Now let us start with open legs. ठीक है, so as I mentioned, I always start with an S pose. क्योंकि मैं अभी ओपन लेग कर रही हूँ, मैं आपको हेड रैम्प पर ओपन लेग का पोज दिखाऊंगी एंड टर्न दिखाऊंगी. बट एज आई मेंशन, मैं हमेशा एस पोज से स्टार्ट करती हूँ अपना वॉक. ओके, स्माइल एंड देन आई लिफ्ट माय लेफ्ट लेग एंड देन आई गो. ओपन लेग पोज, स्माइल, होल्ड द पोज फॉर 4 सेकेंड एंड देन टर्न करने के लिए हमें ये करना है. Then I lift my left leg, I bring my right leg in front, and then I go. Start ramp पर फिर से आके expose किया हमने. I will show you 2 more times. All right. So I start with an stance. Then I lift my left leg, I go. I give an open leg pose. Hold the pose for 4 seconds. Smile. And then turn करने के लिए हमने stance बनाया. Then we pick up our left leg, right leg in front, and then we move. फिर start ramp पे आके वापस से हमने pose किया. All right, I will show you one more time. Focus. Okay, I start with an S pose. Then I go. Open leg pose. S stance.
lift your left leg, right leg in front, and then go. And start ramp पर आकर वापस से pose. Okay, I hope this was clear. If anyone has any doubt. At the head ramp, sway our shoulders. देखो पोज करते टाइम आपको अपना एकदम स्ट्रेट रखना है, बट डेफिनेटली टर्न देते टाइम तो आपको अपने शोल्डर्स मूव करने ही पड़ेंगे, राइट? दैट इज नॉट कॉल्ड स्वेइंग, दैट इज कॉल्ड गोइंग विद द बॉडी. Aarti, this was for Aarti. Can I unmute and talk? Yes. Hi. Hi, Vidhi. Hi, Harry. Thank you for the session. Vidhi, my question was, जब मैंने आपको अभी देखा, तो when you were standing at the head ramp, and I don't know whether I noticed it or what, I saw you kind of before turning, swaying your shoulders a little, maybe like, looking at the audience and looking at the judges, and then No, that was not swaying. Actually, it might not be visible, but वो मेरा हाथ एक right hand was on my waist. Right. So when I was moving that is why वो sway जैसा लग रहा था, but that was actually me moving my hand. Okay, so it's a free flowing thing. We don't have to kind of show our pose there. No. As in show our shoulders move करके, like, normally what we see in the television is they are showing their, the dress that they are wearing. So that way हमको ऐसा कुछ करना नहीं है वहाँ पे. No. अगर आप अपना हैंड वेस्ट पर रख रहे हो तो डेफिनेटली आपके शोल्डर्स थोड़े तो मूव होंगे, राइट? आप अगर अपना नेचुरल भी देखोगे, आप अगर अपना हैंड वेट, आई विल शो यू ऑन माय वीडियो एंड आई विल शो यू. Sure. If you stand, if you bring your hands like this, definitely you can see my shoulders moving a little, and then when I lose my hand, definitely मेरे shoulders थोड़े sway हो रहे. So that is what was I was doing while turning, because I told you, right, I keep my hand like this while posing, and then when I do this and I turn, that is when that happens. It is simple body movement. Got it. Thank you so much. Thank you very much. Welcome. जब आप प्रतिमा, when you are giving your open leg pose, तो आपको कहीं भी bend होने की जरूरत नहीं है. Like your weight shifts to your right leg. That is not bending, that is your weight going to the right leg. Okay, right hip. And Surbhi, no, it is not necessary to walk in these heels. बस एक पॉइंट याद रखिएगा that you have to be comfortable in whichever heel you wear. Second point, heel pointed होना चाहिए, ठीक है? और talk about the heels once again, because some people had joined really late, so it would be really okay, I'll do that. Okay, so I will have to show my heels for that, which is why I will have to just remove them. So before that, if anyone has any doubts related to posing, turning, or practicing, just tell me so that I do not have to wear my heels again. हाँ, तो yes, okay, so I forgot mentioning this concern. आप अपने hand straight रखिएगा. Okay, I will show you. This is what is to be done. Okay, like this. जब आप नेचुरली चलते हैं, ठीक है, आपका जब राइट लेग सामने जाता है तो लेफ्ट लेग भी सामने, लेफ्ट हैंड सामने जाता है, राइट? अगर आप कभी भी नेचुरली वॉक करेंगे, यू कीप दिस इन माइंड टू नोटिस द नेक्स्ट टाइम. जब आप वॉक करते हो ना, तो आपका नेचुरली लेफ्ट हैंड राइट लेग के साथ में चलता है. वैसे ही रैंप वॉक में भी व्हेन यू स्टार्ट, राइट, लेफ्ट लेग के साथ में राइट हैंड सामने जाना चाहिए, लाइक दिस.
एंड बहुत ज्यादा सामने नहीं. अगर आप ज्यादा मूवमेंट चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ये कर सकते हैं, ठीक है. बट अगर नेचुरल शो करना है तो थोड़ा ही मूवमेंट, नॉट मच. ओके, लाइक दिस. आई होप दैट वाज क्लियर, कंचन. Guys, any question related to the walk exercise or pose, please ask her right away, because then she will... Okay, I will. Pratima has a doubt regarding poses. I will show you posing. Okay, so yes, posing is. I will show you both the poses. All right, the first pose is. Okay, she had a doubt regarding the turning, right? Harry, can you please confirm? Yes, she has a doubt regarding the turning pose. Yeah. Okay. So there are two types of turns: open leg turn and an S stance turn, and I will show you that one time. Okay, both दोनों ही एक बार दिखाऊंगी, इससे अच्छे से focus करिएगा. All right. So we move and we move and we go to the head ramp. Okay. फिर हमने S pose दिया. All right. Then we pick up our left leg, सामने रखा टेढ़ा, right leg सामने, ठीक है. फिर हमने लेफ्ट लेग उठाया, राइट लेग सामने, एंड देन वी गो. ओके, आई विल शो इट टू यू वंस मोर. टर्निंग विद एन ओपन लेग पुश. ओके, सो आई मूव एंड आई गो टू द हेड रैम्प, एंड देयर इज एन ओपन लेग पोज. फिर हमने राइट लेग उठा के टेढ़ा रखा, लेफ्ट लेग सामने, देन वी पिक्ड अप आवर लेफ्ट लेग, राइट लेग सामने, एंड देन वी गो. Okay, then comes our S stance pose and turn. All right, we move and we go to the head ramp. ठीक है. This is the S pose. Hold it for 4 seconds. Then pick up your left leg, right leg in front. Again, pick up your left leg, right leg in front. And then again, pick up your left leg and then right leg in front, and then go. I will show this one again. Oh, I'm so sorry. I just tripped. All right, so I will show you again. I move and I go to the head ramp. This is my S pose. Then we pick up our left leg, right leg in front. Then again I pick up my left leg, right leg in front. Then again I pick up my left leg, right leg in front, and then I go. I'm sorry, is there any disturbance in the background? Not everybody is on mute, Vidhi. No. I'm asking मेरे side से तो disturbance नहीं है ना? No, it's pretty perfect. Because someone is talking in the background and I was concerned. So there is another question from Aishwarya. Second turn should be taken on mid ramp. Every turn has to be taken on the head ramp. And Romi asked कि क्या hands को casually move कर सकते हैं pose और turn लेते? Yes, you can. You could see me also moving my hands, right? Someone asked me this question and I said, right, कि मेरे shoulders move होते हैं. जैसे मैं आई सामने, ठीक है, मैंने S pose दिया है क्योंकि मैं head ramp पे हूँ. You cannot see me, you cannot see my feet. I'm only trying to show you my hands. Okay, so this is my right hand like this, because वो back में है तो वो दिख नहीं रहा है. फिर जब मैं left leg उठाती हूँ ना, तो मेरा राइट हैंड ऐसे आ जाता है. ओके, और मेरा पीछे वाला हाथ ऐसे हो जाता है. यू कैन नॉट सी इट. फिर जब मैं वापस से अपना लेफ्ट लेग उठाती हूँ तो मेरा राइट लेग ऐसे हो जाता है. सो यू नो, इट इज माई मूवमेंट. ओके, यू कैन डू वट एवर यू लाइक. इफ यू डू नॉट लाइक टू कीप योर हैंड्स ऑन योर वेस्ट, डोंट डू दैट. कीप योर हैंड्स सिंपली. कोई आप पे डिपेंड करता है, वो टोटली आपको क्या करना है. Okay, so thank you so much, Vidhi. I guess we are sorted for the day, and I would just request you to cover up the heels part. And yes, I will do that. I will only show you the right heel, okay, because अब मुझे वापस से, like, my laptop has shut down and I won't be able to share my screen, but I will show you the right heel that you must use for your pageant. Okay, इसमें height वेरी हो सकती है, सब कुछ वेरी हो सकता है. So this is the right kind of heel. All right, so you can see it pointed है और इसमें सामने platform है, right? This is the platform. All right, this part is the platform. ये आपका balance बना के रखता है.
तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप अपना हील का हाइट कम ले सकते हो, ओके, इट कैन बी इतना छोटा ऑल्सो, ओके, इतना छोटा भी हो सकता है, बट कीप दिस इन माइंड कि आपकी हील पॉइंटेड होनी चाहिए, इट शुडंट बी ब्लॉक हील, ओके, व्हाई, बिकॉज ब्लॉक हील्स में आपका वॉक ब्लॉक होता है, ये बात याद रखिएगा, ओके, ब्लॉक हील ब्लॉक योर वॉक, आपकी वॉक इतनी ब्यूटीफुली नहीं आएगी जितनी इसमें आएगी, ठीक है, so you have to practice in these heels, okay, so these are pointed as you can see, इसमें हाइट कितना भी छोटा सकता है, ये 5 है, okay, 5.5 inches, अब आप चाहे 5 inches का ले लें या 4 inches का या 3 inches का, बट आपकी पॉइंटेड होनी चाहिए। एंड दूसरी चीज है, इफ यू आर अ बिगिनर तो आप प्लेटफॉर्म, लाइक आई एम नॉट अ बिगिनर बट आई स्टिल यूज प्लेटफॉर्म, बिकॉज कभी कभी आप ट्रिप हो सकते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म जो है आपकी हेल्प करता है टू मेंटेन द बैलेंस, ओके, दिस इज द प्लेटफॉर्म, so buy something like this, okay. Okay, thank you so much, Vidhi. It was an Thank you. absolute honor having you here. Thank you so much for being so patient and explaining it so thoroughly and all over again. So now we shall take your leave and would request you. Ma'am, sorry for interruption. Hello, ma'am. I have one question. Yeah, go ahead. मैम एक्चुअली मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए देखी हिल, बट उसमें साइज में हमारे नंबर्स नहीं आ रहे थे, 6 UK 7 UK 8 ऐसे में आ रहे थे, तो हम कैसे नहीं, तो कंसीडर हमारे करें? साइज भी UK 7 UK 8 ही है, लाइक माय साइज इज UK 7, तो आप साइज चार्ट पे जाना और आप अपना फीट का मेजरमेंट लेना, ओके, आप अपनी फीट को एक पेपर पे रखिएगा और आप अपनी फीट का आउटलाइन बनाना पेन या पेंसिल से, और फिर उसका मेजरमेंट लेकर, ओके, इंच टेप होगा आपके घर में, कुछ भी होगा, टेक दैट मेजरमेंट, और फिर आप वो जिस ऐप से आप खरीदना चाह रहे हैं उसके साइज चार्ट पे जाना, फिर उस साइज चार्ट के आपके साइज के हिसाब से कॉरेस्पॉन्डिंग आपको UK 7 या UK 8 या UK 6 पे जाएगा। माय साइज इज UK 7, आई यूज दैट। तो UK इज लाइक बेसिकली जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं, सो दैट इज UK इंग्लिश, बट दैट इज नॉट डिफरेंट टाइप ऑफ इंग्लिश। वैसे साइजेस तो सिर्फ कंट्री वाइज है, बट साइजेस साइज होता है। तो UK 7 is my size, so you can take that into consideration accordingly. Means 7 8 size, yeah, that's like it, the same size है वो। हाँ जी, my size is UK 7. ओके ओके। और जो प्लेटफॉर्म ही आपने बताई थी, तो हम बिगिनर है तो सो नॉर्मल प्लेटफॉर्म भी चल जाएगा क्या? ये प्लेटफॉर्म ये होता है, बिगिनर हो तो आपको Yes, डेफिनेटली प्लेटफॉर्म ही लेना चाहिए। यस, मैंने चेक किया तो इससे भी थोड़ी कम प्लेटफॉर्म के भी थे, तो वो नॉर्मली चल जाएंगे। हाँ। एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, बिकॉज everyone might be getting it, so you can text me personally. Okay, so thank you so much, Vidhi. I would request you to give us some parting words, and of course, we shall take. So it was lovely, talking to all of you and teaching all of you. I hope आप सबने यहाँ से कुछ सीखा and you implement that in your work. And I hope you give in your 100% to the video. And I hope all of you all win. And it was, amazing collaborating with SSIA. It is a huge honor. And yes, I would like all of you to, practice every day. Not just for this competition, but on a daily basis. ताकि आपके आगे की भी competitions में you can use this teaching. Okay, and yeah, that is all. Thank you, everyone. Thank you so much. We shall take your leave now.